Good afternoon. Hello. 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 Good afternoon, everyone. Thank you very much for being here on the special occasion, our Constitution Day. We are organizing song competition, drawing, debate, and speech, and there are so many hundreds of participants in it, and there are few who got prizes. And we are very thankful to everyone who present here. At the beginning of the ceremony, I am requesting our principal sir, Reddy sir, Brahmanand sir, and Dushman sir to come forward and lighting the lamp. Please welcome Brahmanand sir. Please. Dushman sir. I am requesting Reddy sir. Now I am requesting principal sir to come forward. At the beginning of the ceremony, I am requesting principal sir and all of our respected guests to lighting the lamp and start the program. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय Thank you, everyone. Now I am requesting our principal sir, Dr. Sibram Naik, to say a few words to everyone. समस्त को अभिनंदन शुभेच्छा 26 नवंबर 2024 आज आम ये एकत्रित होइछु गोटे महत् उद्देश्य नहीं से माँ माटी मातृभूमि प्रतिष्ठा तथा कॉन्स्टिट्यूशनल डे रो 175तम 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे आज आम 75 वर्ष पालन कलु 1950 नवंबर 26 तारीख रु 2024 आज नवंबर 26 तारीख तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे आर उद्देश्य है जहीपरी भाव आम
प्रति मोबाइल रे आमे हार्डवेयर देखुचु सॉफ्टवेयर नहले मोबाइल जेपरी काम करिपाउ नाही। एक्जेक्टली भारत स्वाधीन हला 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख आमे समस्ते जानिचु से मोबाइल हे जाइथिला किंतु ताकू सॉफ्टवेयर दिया हला 1950 मसीहा आजिका दिन रे 26 नवंबर रे तेबे जाई भारत संविधान आरंभ है तार जो रूल्स रेगुलेशन ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब सेठी दिया हला सेथिरे आमे बहुत खुशी आज आमे 75 वर्ष पालन करछु मात्र 25 वर्ष परे कॉन्स्टिट्यूशनल डे हबो 100 वर्ष आम भारत स्वाधीनतार 100 वर्ष मत पालन करा जिवो। आज आमे गर्व कहूँ आमे समस्ते भारतीय वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियन प्योर इंडियन आमे आमे आमर राइट्स को धरी बसुछु किंतु आमर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी को मध्य मने पकेया पर दिन हला 26 नवंबर। आज आमे ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी काना आम भारतर संविधान काना आमे विभिन्न परीक्षा देइछु खास करी आमे आज आम विभिन्न स्कूल रो छात्र छात्री गण अछन जिमती अगस्त 15 जनवरी 26 रे आमे गोटे देशर गर्व गौरव दिन बोले आमे पालन करूछु। आज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाथरू नहीं 26 नवंबर को गोटे जातीय दिवस तथा समस्त मन प्राण रे से उज्जीवित हम जे आमे समस्ते भारतीय वी आर वन वी आर नॉट टू वी आर वन दैट इज अंडर वन रूफ वी आर इंडियन। आज बहुत गर्व लगुच 75 वर्ष काले हम हो ना हो आसंदा वर्ष कि आउ 20 वर्ष पर किंतु एतिक आमे कहि परिबा आमे भारत जेतल 26 नवंबर 2024 जेतल 75 वर्ष पालन करथिला भारतर कॉन्स्टिट्यूशन आमे प्रतियोगिता देइथलो आमे पुरस्कार पाइथिलो से जो स्मृति 20 वर्ष कि 15 वर्ष पर भारत स्वाधीन हब 100 वर्ष पर मन रखिए आम नेक्स्ट जनरेशन जेते सब आसचंदी मेट्रिकुलेशन +2 कॉलेज ओयूटी विभिन्न कॉलेज रु से माने मन पकेबे जे स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल को आमे जाइथलो 75 वर्ष पालन उपलक्षे आमे कंपटीशन देइथलो आउ आमे उपकृत होइथलो किछि सर्टिफिकेट पाइथिला से होछि स्मृति से स्मृति हला 75 वर्ष रो स्मृति से स्मृति को धरी आमे आज ठिजिबा आउ मो विशेष किछि कहबिनी आम गहन रे ब्रह्मानंद सामल अच्छी राष्ट्रपति तथा गवर्नर अवार्ड टीचर्स रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड मोर बड़ भाई ब्रह्मानंद सामल सर आउ मोर लेफ्ट साइड रे आउ जड़े मोर बड़ भाई अच्छन से अच्छी किस आउ किड्स आमर जो बांदपला रेसिडेंशियल स्कूल रो से होचंदी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा कलाहांडी इंचार्ज नुआपड़ा इंचार्ज आउ समस्ते आमे जानिचु शेषर मो अच्छी आउ गोटे मोर बड़ भाई समस्त प्रिय रेडी सार से सब रेडी थांती विभिन्न कार्यक्रम रे आ खास करी कलाहांडी रो कला और संस्कृति बा आर्ट बेली चाहिए रेडी सार जिंदाबाद रेडी सार बोले समस्ते जानते जे जोर जा ताली हो आम रेडी सार पाई दुल्फन सार पाई सामल सार पाई आउ आपर आमे हमर एडीएम सार अंडर प्रोसेस अच्छन से ऑन द वे अच्छन से आसबे 5 to 10 मिनिट्स इन द मीन टाइम आमे प्रोग्राम को आगे नेबा पई मते दायित्व दिया हिचे गुरु दायित्व आ मु बड़ भाई तथा ब्रह्मानंद सामल को मु अनुरोध करी आम छुआ माने नेक्स्ट 25 वर्ष जो अमृत बेला बेली कुआ जाए भारतर संविधान हो भारतर स्वाधीनता हो नेक्स्ट जो 25 इयर्स 25 वर्ष ताको किपरि से माने आप्राण चेष्टा करेंगे भारत माता को भल पाउचन आउरी भल पाइबे आउ प्रति समस्ते जन जने अमृत संतान आउ से भारत माता को जय कही मु रहूची। धन्यवाद। ओवर टू ब्रह्मानंद सामल सर। आज विशेष कार्यक्रम संविधान दिवस उपलक्षे आयोजित होता सभा मंचासीन ए विद्यालयर प्रिंसिपाल महाशय आमर सान भाई आमर कलाहांडी केस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीईओ तथा समस्त अति प्रिय
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ରେଡ୍ଡି ସାର୍ ସେ ତ ମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସମୟକୁ ଆମେ 2-4 ବର୍ଷ ଆଗ ପଛ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଡାକିଥିବେ ସେ ମାନେ ହଁ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଧରା ଦେବେନି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର शुभेच्छा जनाऊँगी। तत्सहित आपण मैंने सामने जो मैंने अछंती से छात्र युवक पितामाता अभिभावक अभिभाविका जा ए विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री जो मैंने अछंती समस्ते समस्त को मु मोर सम्मान जनाऊँगी, नमस्कार करुच्ची। प्रत्येक कार्यक्रम लगी आग एमती नथिला। आमे जनवरी 26 तारिख रे सब बेले आमर गणतंत्र दिवस पालुथुलु। से गोटे दिन रे आमे आसिले जहा ताको किए केमती स्कूल ले विशेष करी टिके बा से भले आनुष्ठानिक जगह रे हेटा पालन होतिला, किंतु प्रायतः सर्वसाधारण रे सेते बड़ झोर बा बेसी विशेष भाव रे आयोजित हो नथिला। देबे जा हो धीरे धीरे समय परिवर्तन होची। से परिवर्तन धारा रे हमको विभिन्न प्रकार रो दिवस गुड़ाक सब तैयारी करा होची। ये मु गत थर भी कही प्रत्येक दिवस गोटे करिवार तार उद्देश्य अच्छी। जेमिति प्रत्येक व्यक्तिर गोटे ना अच्छी, नाटीए तार स्वतंत्र परिचय, ठीक से भली गोटे दिवस होची सेही दिवस बा सेही माने आपण तारीखर विशेष परिचय स्वतंत्र परिचय। सेथिपाई गोटे दिव्य दिवसटे करागला जे गणतंत्र दिवस बा आमर संविधान दिवस संविधान दिवस। तेणु जेहेतु आम समस्ते ये बुद्धिजीवी मैंने अच्छु, छात्र अच्छु, युवक अच्छु, अन्यान्य माँ मैंने समस्त भौणी मैंने अच्छा ये गोटे कथा हूँ आम संविधान जो आमर तैयारी हैला से तैयारी किपरि हैला, केते लोकंकर श्रम सेठी रहिला, केते समय लागिला आ केते कष्ट सेठी साधन करागला ता ऊपर आम समस्ते निश्चित आपण माने शिक्षित लोक मैंने न जानी थे से दुष्टता मुझे करूनी। आपण मैंने मोठू हुए तो अवश्य बेसी जानी थे, किंतु मोर जहाँ सीमित ज्ञान भितर अच्छी मु जहाँ जानी मु आपण मान पाखरे ताको परिप्रकाश करिया पई जाउची। देश स्वाधीन हो गला परे देश को शासन करिया पई गोटे लिखित आईन रो आवश्यकता पड़ला। मुहे मुहे आईन रही परिवर्तन हो मुहरे मो कथा आपन को अलग हो ता कथा ताठी गले अलग हो। तेणु गोटे आवश्यकता पड़ला गोटे शासन खसड़ा। तेणु से शासन खसड़ा तैयारी करने आमर तत्कालीन जो मनीषी माने थिले से बहुत परिश्रम करचंती। से परिश्रमर फल आज आम पाउचु। जो माने ये सब एथिरे परिश्रम तामाने भागीदार थिले बा कष्ट उठे से आज दिवस आम मानकर स्मरण कर आवश्यकता अच्छी। तेणु से मानकर विषय रे आम टे मन पकेबा से माने केते त्याग करथिले। जेहेतु बयसर टिके अधिका बयस रे पहुँची गलेनी मु टिके विस्मरण होउची, बाध्य होइके टिके से ना गुडी को मु लेखिक आनी लेखा टिके देखिबा पय आपण मानको अनुमति मागुची। तेणु तो आम देश गोटे एमती देश आपण माने समस्ते जानुचन आम देश गोटे बहुत प्रकार विविधतार देश। भाषार अलगा अच्छी, धर्मर अलगा, भेद जाति भेद अलगा, अन्य सबु प्रकार तमाने असुविधा बा भिन्नता आम देश रे अच्छी। तेणु एते बड़ गोटे विराट देश को जहाँ को कि उपमहादेश बोली कहा जाउची, से विराट देश को एकत्र कर बांधी रखिया पई गोटे आईन आवश्यकता पड़ला। से आईन बहीटे तैयारी करने जो माने सर्वप्रथम परिकल्पना कले 1946 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख रे गोटे संकल्प नियागला जे देशर शासन पाई लिखित खसड़ाटे तैयारी करा जिवो। एवं से जो संकल्प नियागला से संकल्प को कार्यकारी करने प्राय पाखापाखि 284 जन सदस्य से थिले। संविधान प्रस्तुति पाई 284 जन सदस्य आमर भारत वर्ष रे थिले। आ सेही जो सदस्य सभा संविधान गठन जो सभा ताहा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्वावधान में सर्वप्रथम आरंभ होता राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व में सेटा आरंभ होता परवर्ती पर्यायर अन्य मानकर आसला किंतु प्रथमे थिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्वावधान में सेटा आरंभ होता तो सेठी आपणकर तो से भद्र व्यक्ति ना टी मोर विस्मरण लिखिनी जड़े राव किए जदि कार मन अच्छी दयाक कहे जदि आपण मान भर जड़े राव मन पड़ूनी से जो संविधान टी आमर प्रथम प्रस्तुत करागला आईन तैयारी करागला ड्राफ्टिंग है ताकू धरिकी विदेश गले कहीपर कि बेस कहीदे तेणु सी विदेश को गले विदेश को जाइकरी आपण विभिन्न देश बुलिले देश बुलिकी से देशर संविधान गुड़ी को से अध्ययन कले से मनीषी मान सहित परामर्श कले परामर्श करी माने विभिन्न देश बुलिले बुलला परामर्श करी से आसिले आसला ताकू पुणी थे तर्जमा करागला पुणी थे तर्जमा कर विभिन्न अंचल को गले पाखापाखि 100टा देशर संविधान को अध्ययन करागला आमर संविधान प्रस्तुत होगा पूर्व भारतर संविधान प्रस्तुत होगा पूर्व 100टी देशर संविधान आम देशर जो नेतृस्थानीय लोक बुद्धिजीवी मैंने जो मानकर एथिरे हाथ थिला से माने विभिन्न देश बुलिले बुलिकी तथ्य संग्रह कले तर्जमा कले वैशिष्ट्य को आलोचना कले एवं से जो वैशिष्ट्य थिला से देश मानकर से वैशिष्ट्य गुड़ी को संग्रह करी आम भारतर संविधान को सेटा पुष्ट करने उल्लिखित कले से कहा जाए सारा विश्वर विधान समान भारतर संविधान आम भारतर संविधान में सारा विश्वर सारा पृथ्वीर विधान अच्छी जेहेतु आम सारा पृथ्वीर तथ्य संग्रह करूँ पृथ्वीर तथ्य संग्रह करी आम भारत को सुहाइला बड़ी संविधान टे प्रस्तुत करूँ कहीं ना भारत को छाड़देले बोध हुए अन्य कौन देश पृथ्वी में ये बहुभाषी बहुधर्म बा बहुत विचार देश प्राय नथिबो तेणु आम पाई गोटे भिन्न संविधान आवश्यकता थिला तेणु आमर महामनीषी माने ताको साधना करी चेष्टा करी तैयारी कले परवर्ती पर्यायर जो ड्राफ्टिंग कमिटी है ड्राफ्ट गुड़ी को तैयारी है से ड्राफ्ट को सर्वमान्य महामान्य भारतर संविधान प्राण माने प्रतिष्ठाता कहले अत्युक्ति हेब नहीं से डॉक्टर भीमराव जी आंबेडकर महाशय से अध्यक्षता चेयरमैन हेले एवं से आपण से संविधान को ड्राफ्टिंग रे भाग नेले से मुख्य दायित्व नेले तांकरी चेष्टार प्राय दीर्घ वर्षर परिश्रम 3 वर्षर अक्लांत परिश्रम पर 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे आमर ये संविधान कार्यकारी है से दिन ठारू आमे 26 जनवरी को आम संविधान दिवस हिसाब से आमर एवं पालन होची किंतु से गणतंत्र हिसाब से दिन हिसाब से पालन करा जाऊ थिला तेबे कथा होची जे आमर जो संविधान टी आमर हैला ता द्वारा आमर लाभ कौन हैला आग तो आम शासित होतलु देशीय राजा मान द्वारा मुगल बा आमर इंग्रेज मान द्वारा आम शासित हो बहुत वर्ष तेबे ये जो संविधान टी आम पाइलु आम कि लाभ पाइलु तापर गोटे आम टिके आलोकपात करवा जे आमर जो संविधान टी आम पाइलु से संविधान द्वारा प्रथम लाभटी आमको हैला जे आग आमर सामाजिक विधि व्यवस्था अनुसार केते प्रतिष्ठित व्यक्ति मान पाखरे प्रभुत्व संपत्ति थिला उदाहरण स्वरूप राजा जमीदार एवं से श्रेणी लोक मान पाखरे प्रभुत्व संपत्ति थिला किंतु संविधान आसिला परे से आईन परिवर्तन होकरी संविधान शक्ति बल से ठारू उद्वृत जमी को सीलिंग बा ताकू कौन कह सीलिंग माध्यम उच्छेद करागला ठारू तांकू साधारण लोक मान पाखरे बांटी दिगला जहाँ फल किछि भूमिहीन लोक भूमि पाइबार अधिकार पाइले आउ जो लाभ है समाज रे गोटे अति निंदनीय घृण्य व्यवस्थाटी आमर थिला सेटा हला जाति प्रथा अस्पृश्यता आम भारतर सबुठारु गोटे कलंकित अध्याय तेणु आम देश रे थिबा से जो जाति भेदर भिन्नता थिला
उच्च नीच विचार थिला संविधान बल संविधान आईन बल ताहा से प्रथारे मध्य परिसमाप्ति घटवा गला उच्च नीचर भेदभाव आउ रहिला नाही समभाव संपन्न समाजटी आमे पाइलु तापरे कौन हला ना आग थिला कौन रजार पुओटे रजा हब साधारण लोकटे सी आ शासन मुह माड़ी पारिबो नाही किंतु एबे से व्यवस्था संविधान आसिला परे उठीगला रजार पुओ आ रजा हेबार सौभाग्य पाइबे नहीं जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि से जी हुंतु से जदि जनता समर्थन पाइले जनसाधारण माने तांको प्रति शुभेच्छा रहिला ताले सी शासन गादी बसबे शासन करेंगे आमको ए सुविधा गुड़ी आम पाक आसला संविधान माध्यम ता छड़ा केते गुड़ी अधिकार मध्य संविधान आमको देइछि सेगुडाक मु आलोचना करने चाहूनी कारण आपण माने समस्ते से विषय जानिछन्ति ता सहित किछि कर्तव्य मध्य देइछि किंतु देखा जाए आमे जेते आमे मु निजको मध्य से भितर मिसौछि आमे हमर अधिकार बाबद रे जतकी सचेतन कर्तव्य बाबद रे हुए तो कोठी आम भितर टी कमी रही जाए यही बाबद गोटे छोटे उदाहरण दूसरी प्राय 20-25 वर्ष तलर घटनाटे कहूँ नयागढ़ से आपन जिला हाँ जिला तो हो सारी नयागढ़ जिले में गोटे झड़ तोफानटे होता समय गोटे सर्वसाधारण कूह भितर कूह को लगी गोटे बर गछर बड़ डाल खंडे भांगिकी पड़गला कूह पानी भितर तो सेठू कौन करागला से पानी भितर पड़गला से तो कूह गुड़ाक आप पानी उत्स थिला लोक से पानी गाधेवा पाऊले पीवाई नौले अन्य व्यवहार नौले तेणु लोक गाँव लोक अचल हो गले तो दिने गला 2 दिन गला 3 दिन पर से कौन कले ना स्थानीय सब कलेक्टर बा उपजिलापाल पाखक गले अभियोग नहीं आम जिले में आमर सब डिविजन रे एमती जो बात्या बा पवन है पवन गोटे बड़ डाल कूह भितर खसी पड़ी आमे पानीय जल पाइबार आम जल व्यवहार कर असुविधा पड़ुचु आपण आम साहाय्य करंतु सी सब हसी हसी कहले जे ठीक अच्छे आज्ञा आम तो प्रशासन दृष्टिकोण मु निश्चित रूप से सुविधा करने चेष्टा करी कि मुझे आपण मान गोटे अनुरोध करुच्ची आपण मैंने जी लोक जी खर्चान्त होती कष्ट पड़ी मो पाक अभियोगटा नहीं आसिले से लोक जब चाही था से डाल खंड को आपण मैंने निजे से कूह भितर आराम से काढ़ी दे पारि था तेणु ये आसबार आवश्यकता आपण मानक पड़ न से दृष्टिकोण मुझे कहबार मर्म है आमे समस्ते आम घर पाखे गोटे साधारण असुविधाटे हेले म्युनिसिपालिटी जेहेतु आम रोचु आम बेले बेले जोटा आम द्वारा हो पार्बा से काम को मध्य हाथ को न नहीं अपेक्षा म्युनिसिपालिटी तार विचार करू बा सेटा को समाधान करू यहाँ आमर सचेतन हबार अच्छे आम दायित्व कौन आम प्रति अच्छे आम कौन कले भल हम तेणु आमको किसी दायित्व दि जाए किसी अधिकार दि जाए समस्त नागरिक माने आमे जिते बड़े ये अच्छू समस्ते आमर कर्तव्य करने सहित आम सचेतन हेले कर्तव्य पाई आमर संविधान रो जो लक्ष्य रही निश्चित रूप साधित हम आज खुशी लगुच जे विद्यालय रे गोटे विशेष परिवेश रे भल रकम गोटे संख्याटे एकजुट होती पितामाता माने एवं छात्र छात्री माने तांकर अभिभावक माने बहुत खुशी लगुच तेणु यही जदि समस्त गोटे आग्रह बा सहयोगटे रहिबो प्रत्येक अनुष्ठान बा कार्यालय बा कार्य संस्था निश्चित रूप आगको जीव तो संविधान आमको बंचापी राह देछि अन्याय विरुद्ध लड़ापी राह देछि मुक्त भाव में दीपद कहवाई आप स्वाधीन भाव में दीपद कहवाई अधिकार देछि भल मंद विचार करिवार अधिकार देछि से संविधान जो आम भितर समतार भाव प्रतिष्ठा होती समाज रु भेदभाव दूरे जाइए आउ बहुत गुड़े सुविधा आमे आज पाई पारचु तेणु आज पवित्र दिन रे आमे आमर ये संविधान को बचापी अति कम रे मानसिक स्तर रे गोटे संकल्पटे नेबार आवश्यकता रहुची जे जड़े भारतीय नागरिक हिसाब रे भारत जड़े अधिवासी हिसाब रे जड़े भारतीय हिसाब रे संविधान को आमको बंचेबाक अच्छी आम संविधान जपरी विनष्ट न हो जाए नष्ट न हो जाए से प्रति आमको ध्यान देवाक पड़ो आपण मैंने समस्ते बुद्धिजीवी गण ये बसते समस्ते जानूे किसी स्वार्थपर व्यक्ति बा गोष्ठी
संविधान केतेक नीति नियम को सेमाने अणदेखा करी विभिन्न कार्यक्रम समाज रे करबा पई चेष्टा करथांती। तेणु सेपरि जेपरि न होई पारे सेथिपे आमे समस्ते सचेतन रहबार आवश्यकता अछि। आमे संविधान प्रति सजाग रहबा पड़िबो। संविधान रो जेमति कोनोसी क्षति नै होय, कारण संविधान हेउची आमर स्वाधीन भारत रो एक महाशास्त्र। जेमति कि आमे रामायण महाभारत भली धर्मशास्त्र अध्ययन करूचु, संविधान मध्य से भली गोटे धर्मशास्त्र। आमे से जो नूतन गोटे शास्त्र, से शास्त्र आम विभिन्न शिक्षा, जीवन जीविकार शिक्षा दउची, बंचिबार विभिन्न प्रकार आईन संबंध शिक्षा दउची, अधिकार संबंध शिक्षा दउची, देश विदेश संबंध शिक्षा दउची। तेणु आमे संविधान को बंचेबार आवश्यकता अछि। आमे यदि संविधान को बंचेबा ताहले आम संविधान आमको सुरक्षा देव। तेणु आमे समस्ते आज पवित्र दिवस रे आपण मानक समस्त को मु विनम्र निवेदन करुची, आगामी दिन रे जेपरि आमर संविधान सुरक्षित रहिबो, आमे जेमति खुशी रे बंची परिबा, एक सुस्थ समाज गठित होई परिबो, सेति पई समस्तंकर किछि ना किछि अवदान रहू। एई विनम्र निवेदन सहित आपण मानक मोर वक्तव्य रखुची। नमस्कार। हरिओम। आम गण रे कलाहांडी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आमर तन्मय सर आम उपस्थित अच्छन। समस्ते करताली सहित स्वागत करवा सर को। वर्तमान मो दुष्मंत सर को अनुरोध करी से सभा को आगे नेबे। दुष्मंत आज्ञा। जो डिबेट कंपटीशन होता डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेज आ स्कूल लेवल स्टूडेंट माने बहुत बढ़िया चमत्कार भावे से माने कहिछन। सेति मध्यरु मु डाकिबी हमर एम माने शॉर्टकट ही नोस वेरी वेल। तार ना हला अंकित कुमार मिश्रा। करताली सहित स्वागत करवा। दे आर आवर पिलर ऑफ सक्सेस। से माने होजन हमर भविष्य देशर। से किछि आपन को उद्बोधन देवे अंकित कुमार मिश्रा। ओवर टू। A very warm afternoon, respected board members, ADM sir, principal sir, and esteemed judges and panel members, and the audience and my dear friends. Today we are gathered here to witness the Constitution Day of India, to witness the day where the whole Constitution, according to which that day in the competition, I itself represented the view of a constitution. What exactly is the definition of a constitution? We understand the definition itself says that constitution is a set of rules and regulations according to which the governance of a country is carried out. So this is a very important topic that we have to keep it in our mind. As a citizen of India, it is our respective duties to know about our constitution and remember our forefathers, and especially the one who were behind it, led by our Dr. Bhim Rao Ambedkar ji.
who was the father of and was the head of the drafting committee and as presided in the committee which was started by the Constituent Assembly headed by Dr. Rajendra Prasad. And let's not forget the level of hard work they have done, the day and night they have spent for this glorious constitution under which we are today. They have taken the knowledge from each and every corner of the world that we cannot believe how much hard work they have done in that time during the British rule. Coming from a Dalit family, reaching to a level, national level, going to various corners of the world, understanding their constitutions, bringing points from them, and at a time they are making it. So Dr. Bhimrao Ambedkar ji's the role he has played is, I think, cannot be expressed in words. And today I feel proud to say about the Constitution. So I just want to say that let's not forget the forefathers, and as a citizen of India, it's our respective duties at least to know about our Constitution. And in family also, it is our duty as parents. I would like to say that all the parents that please teach their students about our Constitution. And the Constitution has given us the fundamental rights. As sir said about, we are all very much emotional about, we are very much excited about the fundamental rights that the Constitution gives. But everyone forgets the fundamental duties. So it is our duty as a citizen to reciprocate with the government and dive ourselves into the fundamental duties that is granted so easily by our Constitution of India. And today we are sitting very comfortably here because of the level of sacrifice that our forefathers have done. Imagine the time under the British rule. No Indians were given independence to even stand and go there. Today we are moving independently because of the sacrifice of the great leaders. So especially, I would like to give from my heart, from my soul, to all those forefathers who given us the independence and then drafted this beautiful constitution under which we all are today. So let's not forget this constitution and let's join our hands and take this India into a Vikshit Bharat in the future in 2047, as started by the government of India, led by our Prime Minister Modi ji. And that day also, I would like to quote one thing that our Prime Minister said, that the religion of the government is India itself. And the holy book that we have, the government's holy book is the Constitution itself. And the only devotion that we all citizens have is the devotion towards our motherland, that is India. These are the great words by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And at last, yes, I want to quote again one quote by our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. He said that day also I said in the debate competition also I mentioned this, and today also a lot of people are present, so I want to just present this last thought that the great leader Atal Bihari Vajpayee ji had said. He said that, I just request everyone to listen this. He said that governments may come and go. Governments may come and go. Political parties may be formed and dissolved. Many political parties will come and they will be dissolved. But the country should survive. And the democracy should survive. It should last for forever. These are the words of the great Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, to whom I love from my core of the heart. His words are actually the words under which each and every citizen should follow. So, at last, thank you everyone I'm very privileged to be present here and speaking in front of the board members. Thank you, sir. Thank you, Ankit. देश ने हमको क्या दिया? आज का समय में 26 नवंबर को याद करना, देश को हमने क्या दिया, ये चिंता करना पड़ेगा. देश को हमने क्या दिया. Thank you very much, Mr. Baba. Now
One more, Aryan Naik. Aryan Naik is here. Aryan? Arya Naik. She is coming. Your feelings you share with our brothers and sisters. Constitution is not a mere lawyer's document. It is the vehicle of life, and its spirit is the spirit of age. Very good evening to one and all present over here, respected dignitaries, respected parents, and my dear friends. I am Arya Naik from Mamanishwari University from the Department of English, and I feel privileged to stand here and speak something about our Constitution. 26th November, that is the birth of our fundamental rights. 26th November, that holds utmost significance to the Indian citizens. I will be talking about the history of 26th November. That is, on 26th of November, the Indian Constituent Assembly adopted the Indian Constitution, and it finally came into effect on 26th of January 1950. In 2015, on the 125th birth anniversary of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, Government of India declared 26th of November to be celebrated as the Constitution Day. It is also known as the National Law Day, and the architect of Indian Constitution, that is Dr. Bhimrao Ambedkar, is also the first Union Law Minister. Now, talking something about our Constitution. Constitution provides us with every rights that we have today. For example, the most important right, that is today, the reason which I am standing here and speaking to you, the right to freedom of speech and expression. Furthermore, the right to equality, right against exploitation, right for constitutional remedies, etc. And the most important part of Constitution is that Dr. Bhimrao Ambedkar has kept the clauses of Constitution flexible so that amendments could be done whenever the situation demands, because change is the only constant. Change is the law of nature. Therefore, we should remember the great heroes who let this happen. With this, I conclude. Thank you and have a good day. Thank you, Arya. Last but not least, one more. You might have remembered the word when the Swami Vivekananda had visited 1893 Chicago. He pronounced, "My dear sisters and brothers of America." And now, 26 November, I can repeat here, "My dear sisters and brothers." We should remember the 26 November. Thank you very much, Aryan Naik. Now, next it's Bhaja Deep. Deep is here. Please come. From OUAT. Good afternoon, dignitaries, parents, my friends, brothers and sisters. I would like to mention that we all are Indians here. I am proud to be an Indian and the part of the Indian to be the part of the Indian Constitution. My friend Ankit and Arya has already told regarding the significance and the history of Constitution Day. We are gathered here to celebrate the Constitution Day of India on 26th of November. I would like to say that today's youths are blaming the Constitution regarding these laws and that laws. They think that laws are not appropriate for today's world. But let me tell you, that Constitution, to make that Constitution, it took 2 years, 11 days, and 11 months and 17 days. How could you blame that? Obviously not. We need to change ourselves. We need to change the rules and regulations, but we cannot blame the Constitution and the persons who made it. Because as my friend said, that Constitution is flexible. We can make amendments, but we can't blame that. Today, in everywhere, I'm seeing in reels, shorts, and in every kind of situations, there is something argument is going on between the society, between the people, between the youths, and these laws made, that kind of laws have been made. But we need to adopt that. We
can question that as an Indian, as an individual from the India, we have the right that we can question that, but we cannot blame that. That is my point that I want to explain here. And another thing is that all the freedom fighters had made, and the history behind Indian Constitution Day is very amazing. Looking behind the date gap between the Constitution Day and the Republic Day, and the Constitution Day 26th November 1949, the Constitution was completed, but it was adopted on 26th January 1950 because 26 January was a holiday for India, because on 26 January 1930, India celebrated the Swatantrata Divas. That's why our former Prime Minister Jawaharlal Nehru suggested to adopt the Constitution on 26th of January 1950. So as an Indian, I would be proud that we have such a greatest, the largest written constitution of the world, and we are very proud that I'm very proud, and we should be proud that we are Indians having the largest constitution. Thank you. Thank you, Deepa. It's a great day of the people, by the people, and for the people. And these three mantra of the people, by the people, and for the people, that's equal to 26th November. Thank you very much. Now, over to Dushmant Bhai. After that, we'll have a chief guest of our district, Kalan district, additional district magistrate. Over to first Dushmant Naik, sir. आज दिवस रे उपस्थित आमर श्रद्धेय एडीएम सर आम गोटे छोटिया कार्यक्रम प्रयास करूँ सार सांगे मिसिक कथा होइतिलु जे आम ए दिवस को टिके बड़ आकार सेलिब्रेट करवा विभिन्न कॉलेज रा कंपटीशन करवा भाविलु जिते सुंदर गोटे कार्यक्रम होता से दिन भी मुझे गॉर्जियस पिला मन कहते अभी तो 2 जन 3 जन आम कहले आम स्टूडेंट माने ताकर पेरेंट्स भी थे आम गर्व कर से सुंदर कहते संविधान दिवस को लेकर बहुत सुंदर डिबेट कंपटीशन होता एसे कंपटीशन होता ड्राइंग कंपटीशन था तार आज आम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम करम एडीएम सार को रिक्वेस्ट करूँ अनेक कार्यक्रम व्यस्तता भितर समय बाहर कर लगी स्वामी विवेकानंद परिवार तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ जहाँ भी गोटे भाया गोटे उत्साह करवार लगी सार आमर संग आम गहरे अच्छा से आमको वार्ड देते जे सकाଳେ बहुत व्यस्तता भितर थिले से 3टा पर कले निश्चित भाव से मु जीवी बोली कही उपस्थिति आमको उत्साहित समस्त को करवा आमर समस्त से आदर्श मु निवेदन करबी आज दिवस से आम मान को उत्साहित करवार लगे दीपद कहबे तापर आम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम करमा सर। Respected director of this organization, respected the president of Sabhakhya Sahitya Samiti, because I knew him earlier also, because I had attended some meetings with him, additional CEO Kees, and my elder brother, so to say, when I was very child, a very young child, very small child, when I was going to Manikeswara High School, he was one of the renowned artists of the city during those time. And all the parents, all the teachers of this institution, all the students, I welcome you. At the same time, I congratulate you because we are all Indians. One of the speakers told just minutes before that being Indians, we should be proud of our Indian Constitution, because it is the most voluminous constitution in the world, and no country has a constitution like ours. Whenever
I think of the constitution actually many times actually. Every day I think of my constitution. Because I am related to administration, that is why I, on every day, so it is every moment I think of constitution. But today is a special day because on this very day, our drafting of the constitution was completed. At the same time, it was also approved in the Constituent Assembly. That's why this 26th day of November is being celebrated as the most important day for our constitution. Years together means hundreds of years. We were under the British rule. We did not have freedom. We could not think of our fundamental rights. But after independence, or just before independence, we got a chance to create our own our own constitution. Because there was also selection of some of the people of our country. They will sit together and they will write down the constitution of our country. And the election was indirect because it was not possible on the part of the people to sit together or to hold election, because during those days the people did not know what was election. That was why all the important peoples of our country, the wise people of our country, they evolved a system that each corner of the country should have a representation in the Constituent Assembly. And however, it was done also. And finally, there were 299 members because of the partition, because there was a division. Pakistan was separated from our nation. That's why 2 Constituent Assemblies were there. But however, we, in course of time, we became able enough to write down our own constitution. As the name of this institution is Vivekananda, let me remember Vivekananda. Vivekananda kahuthile, mate kichi bhalo manisha diyo. Give me some men and women, good men and women, and I will sack this whole world. Kahinki kahuthile? Semiti exactly. A constitution is nothing but a book. It is a doctrine. It consists of certain rules and regulations, certain fundamental laws of the land, but it has got no life. Then who gives life? Who gives life? It is the people, the rulers, the people, those who man the various organs of the government, they will give life to this constitution or this doctrine. That is why we need good people for the implementation of all the rules and regulations, all the provisions of the Indian Constitution. Because there is a chapter that is national power. National power. Suppose a country has nuclear power, number of installations, number of bombs are there with him, with that particular nation. But the chief of the nation is not good one. The soldiers are not good one. Then they cannot use those nuclear power properly. That is why a country needs qualitative people. And it is a message from my side, because I have been in administration for the last 20 to 23 years. I have been observing all the things. That's why I'm speaking, that we have to be prepared properly to read, to understand our constitution first. Most of the people have failed to understand the provisions of the constitution because it will take much of time. Firstly, we have to make a demarcation between our legislature, executive and judiciary first. But most of the wise people also, they don't know how to demarcate, because we are sending a person as MLA, member of Legislative Assembly, to which place? To the Legislative Assembly. And due to some reason or other, that person has become chosen as the minister, council minister, one of the ministers or cabinet ministers. When he becomes the cabinet ministers, when he works as a cabinet minister, he is a part of the executive. He is a part of the executive. And when he comes to his own constituent assembly, and when he moves to mingle with the people to know about their problems, at that time he is a part of the legislature. But
it is non-officially I'm telling, most of the people, they mix them together. That is the whole problem. I'm not an executive. If I'm an MLA, I'm here in Bhavani Panda means I'm not executive. I'm the representative of the people. But when I work as a cabinet minister, at that time my power is enhanced. A lot of things are there in Indian constitution. A lot of measures are to be taken to understand the Indian constitution. Actually, if we look at very small, one stanza is there. One stanza that is a मुझे गीत भलिया लगे, preamble of the Indian constitution. What is preamble? समस्त पढ़ी थिबे, समस्त जानी थिबे. Preamble, it is both beautifully, it is written by our we the people of India having solemnly constitute to we the people of India having solemnly constitute. देखंतु केमते लिखा हिची we the people of India, not I, we the people of India. Still it is continuing. आमे we the people of India having solemnly resolve, आमे resolve करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु जे कोण ना भारत को कोण करिया पई ना टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Two words were not there initially, secular and socialism, but in later period these two words were inserted. आमे ए जे गोटे वर्ड को आमे गोटे शब्द को आमे जे बुझिबा, it will take a long time to understand. केते period न गोटे केवल we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign. What is sovereign? Sovereign, our country is sovereign internally as well as externally. We are not dependent on any foreign country of the world to take our decision. Internally, so many organizations there, thousands of organizations are there, but the government is above all these organizations. The government is not influenced by any organization. Internally also it is free to take any kind of decision. It has the authority to control the law and order situation inside the country. Sovereign. Sovereign, democratic. Democratic because we represent the people through election. We cast our votes in favor of different political parties, and the party which gets the majority, that party forms the government. Democratic in nature. Lokamane bachibe. Of the people, by the people, and for the people. It is the people, they can change the nature of the government, the color of the government from time to time. Democratic, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a democratic, then sovereign democratic, again, republic. Republic means the head of the state should be elected. Our president is elected, whether directly or indirectly, it doesn't matter, but he is the elected chief. So जहाँ भी हो, एटा को आमे जदि भलो करी पढ़िबा, जदि भलो करी बुझिबा, ताहले आमे पर जानी परिबा जे what is written in our constitution, what is the philosophy of our constitution, what was there in the minds of the people, those who wrote down the Indian constitution. आम जानी परिबा. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Secular, एटा गोटे एमती गोटे शब्द बुझी परिबे नाही. People can never understand what is secularism. पूरा ऊर्ध्व को जीवा को पड़िबो. बोधे से हमर माने विवेकानंद बा अरविंदो को माने तांको पाया को गले जे one can understand what is secularism. But here we cannot have discussions or deliberations on secularism. Then justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. Fraternity केते भलो शब्द सब लिखा हिची, केते संयोजना करे छि. It is just like a song. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In this Constituent Assembly, this 26th day of November, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. बहुत सुंदर भाव लिखाई गोटे गोटे शब्द को गोटे गोटे क्लास को 3-4 क्लास भी लगे कारण से बहुत जिनस अच्छी तार मेरिट्स अच्छी तार डिमेरिट्स अच्छी तार क्रिटिसिजम्स अच्छी आम जदि बुझा चाहिए. So however, we must remember the hard work, the diligent work of the people, those who wrote down our Indian constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar को दिया हला because he was very much well versed in English also. He was very much
means he was able enough to write down the constitution. He had also means he went through so many constitutions of the world. बहु पढ़ी सारा पर बहु कन्स्टिट्यूशन पढ़ी सारा पर जिते सब भल भल जिनस अच्छे सब आम आणला लोक कहले से द पीपुल क्रिटिसाइज्ड बिकॉज देयर वर लॉयर्स पैराडाइज कहते कन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत लॉयर्स थे दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द लॉयर्स पैराडाइज दैट द पैराडाइज ऑफ लॉयर्स किछि लोक कहले ना इट इज अ बोरोड कन्स्टिट्यूशन because so many provisions have been borrowed from different countries of the world, United Kingdom, Canada, Weimar Constitution, Germany, ଆପଣଙ୍କ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अमेरिका एमती सब कहले ना यहाँ बोरोड कन्स्टिट्यूशन सीट आम माने कौन कहले समस्ते अम्बेडकर समस्ते मिसी कहले ना रे भाई खराब तो नुह भल जिनस को आपणेबार खराब कौन अच्छी केते जन कहले नो इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 1835 मसीह जहाँ जहाँ होता सबको आणिक रखी देछ इंडियन कन्स्टिट्यूशन कर क्रिटिसिजम किंतु लोक कहले अरे बाबू आम तो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी को आगु देखी देखी आसु वी हैव बीन विथ द ब्रिटिशर्स मान सहित आम बसी बसी आसु सब जानीचु तो शुड लेट अस एडॉप्ट पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी तो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी कले एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरलिज्म एक्चुअली फेडरलिज्म दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेडरलिज्म केवल कहीदे ना सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट रहिबो स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट रहिबो दैट इज फेडरलिज्म हे गला सेमति न हो एतर बहुत जिंस अछि so many things are there because we needed a central government which should be more powerful than that of the state governments because it covers a lot of means small states छोट छोट स्टेट्स थिला परे माने मिसी गला परे हमरो जतकी हेबा त वर्तमान अछि से जहाँ भी हो देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर इज स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स पावर टू मेक लॉज इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक इट्स ओन जुरिस्डिक्शन तांकर सब माने भाग कर दिया हला एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट आ जते बड़ी प्रॉब्लम हो से इमरजेंसी रखा हला to make this government more powerful there is emergency provision in our Indian constitution state emergency financial emergency national emergency सब emergency गुडा रहिला तापर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप रही फाइनेंशियल पावर किसी रिलेशनशिप रहिबो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप ऑल दिस थिंग्स आर देयर आउ तापर दे आल्सो थॉट अप टू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को आम जो अलग कर द्वारा वी कैन नॉट थिंक ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन्स दैट इज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ए तीन जन मिसेदेले दैट इज अ गवर्नमेंट बिकॉज ड्यूरिंग मोनार्की देयर वाज कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए तीन जनकर क्षमता जनक हाथ में था ड्यूरिंग मोनार्की से राजा जहाँ कहते लॉ होता दैट वाज नो लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंटेशन भी लोक मैंने करते से देखुले जदि किसी भूल होता जहाँ भी होता से दंड विधान भी से निजे करते सो देयर वाज कंसंट्रेशन ऑफ पावर तापर मॉन्टेस्क्यू गोटे पॉलिटिकल फिलोसोफर आसिले मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर लिखिं से जहाँ भी हो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंडिपेंडेंट कहीं करवा नहीं लेट अस कम डाउन टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन एमती गोटे लोक दरकार जी कि से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो बुझो आमको बुझेब एंड व्हिच दैट फेलो दैट इज सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी रहिबो इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स between the two governments Andhra government and Odisha government or Chhattisgarh government then who will decide it if there is a dispute on any constitutional provision then the matter will be taken to the Supreme Court the judiciary is there to interpret the law ना एटा तुमरो भूल होची एटा भल होची बोल कहिबे जते बेले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भीतर हेबो देन द मैटर विल बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री तो जुडिशियरी ही ताकू रखिबो जुडिशियरी आउथर भी हम कोन कहू ना फंडामेंटल राइट्स वी आर टॉकिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स कथा तो सब बेले कहूछु राइट्स कथा सब बेले कहूछु आ केते बेले आमे देखिबा आई वांट टू पुट अप ए सीन बिफोर ऑल ऑफ यू आमे जदि मार्केट के जीवा आपण देखिबे दुटा जिनस कहबा चाहू छी मोठी आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली envisages our rights fundamental rights at the same time it has direction towards the people to obey the government at the same time to perform certain duties because rights and duties are those they are the means two sides of the same coin जदि आमे केवल अधिकार हो चली आमे कर्तव्य करवा नहीं मु जदि एमती हाथ हल चली एबे
ଜଣେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ वी शुड स्टॉप स्विंगिंग योर हैंड्स व्हेन अदर नोज बिगिन्स जनकर नाक जदि बाजिबा पर्यंत मु जेमती माने बुले बुले जीवी तांको नाक को बाजिबो बुझिले कि दिस इज माय राइट मो हाथ को मु स्विंगिंग करिवि बट व्हेन हिज नोज बिगिन्स तांको बाजि जीवो तो तांकर क्षीर्ण होबो कि तांकर राइट टा सेतपिंग कहै छी जे आमे आमे हमर राइट को मानिबा माने साब्यस्त करिबा ताको एन्जॉय करिबा केतेबेला पर्यंत ना अन्य जनक राइट क्षुर्ण न हवा पर्यंत आमे ताको करिया मो गीत सुनिबा को चाहूची अब इनसाइड माय होम और इनसाइड माय हाउस मु एमिति वॉल्यूम रे लगेबी गीत जोटा कि अन्य घर रो पिला जदि परीक्षा देबा में जाउथिबो ताको असुविधा हवा कथा न हो किंतु एत प्रोसेसर रे हम जानि पारुथिबे माने केमति हमर राइट सब हम करछु माने वी आर एन्जॉयिंग प्रोसेसन एक्चुअली सी माने 15टा वाद्य एका संगे बजाइबे एटा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीट अपन जानि जिवे जे माने आमे केते आमे कॉन्स्टिट्यूशन को केते सम्मान दउछु आमे फंडामेंटल राइट्स कथा कहूछु at the same time there is a chapter that is called directive principles of state policy it is a direction a cluster of directions are there in the constitution and constitution direction dochu both the governments central government as well as state government ei kama babu sabu karo eta jodi karibo tahle tomro मान रहिबो इंटरनेशनली भी तुम मान रहिबो बहुत जिनस सब रे अछि से सब पढिबा हम जदि गोटे गोटे पढिबा ताले देखिबा हमर पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हबो से सब जिनस रही छी माने मद्यपान न करिया पई कहै छी खराब माने भाषा को हम कि माने प्रिजर्व करिया पई कहै छी we can preserve our monuments also all these things are written in the directive principles of state policy ताको कोन कोन क्रिटिसाइज करंती it is the sleeping beauty of the Indian constitution directive principles of state policy because it is non-justiciable nature one cannot move to the court of law even if certain principles are violated either by the state government or the central government सेति ताको critics माने कहंती it is the sleeping beauty of our Indian constitution आ विशेष म किछि कहउनी म आपण मान को आज म आपण मान को आह्वान करूछि आई एम गिविंग ए क्लैरियन कॉल लेट अस कम फॉरवर्ड एट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीनोटी ऑर्गन बाबद रे आपण को कहितली तीनोटी ऑर्गन एटी जीटी ऑर्गन मिसी के रहिछि बिकॉज़ इन अ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी टू ऑर्गन्स आर फाउंड टुगेदर केते बेले ना जेते बेले द कैबिनेट मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स मान हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कलेक्टर होछंती एग्जीक्यूटिव आमे भी तांकर पार्ट एंड पार्सल एग्जीक्यूटिव किंतु जने लेजिस्लेचर केते बेले एग्जीक्यूटिव हे पारुछि ना से जेते बेले मिनिस्टर हे जाउछि सेते बेले से हे पारुछि सेति पई याको हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कहछु पार्लियामेंट इज आल्सो सुप्रीम इन दिस रेस्पेक्ट एटा को बुझिबा में हमको बहुत माने दरकार याको टेक्निकलिटी सब रही छी काहे कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कहा जाय एटा होछि तार माने प्राइम मिनिस्टर कम्स फ्रॉम द लोकसभा तांको चेंबर आछंती दैट इज अ पार्लियामेंट बिकॉज माने हमर जो गवर्नमेंट हम जो चालीस गवर्नमेंटा कहा ना रे चली वर्तमान मोदी गवर्नमेंट कहूँ ता पूर्व जी थिला ता ना रे कहबा हमें ए वर्तमान नवीन गवर्नमेंट कहूला एबे कहूँ मोहन गवर्नमेंट से बिकॉज द चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द आइदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से आम जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी आ बहुत फीचर्स लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर आउ एते कहबा तो बेल नहीं तापर केतेबेले आम कहूँ माने जो डोमिनेंस रहिबो there should be dominance of the central government over the state governments IAS jete bele saman choose koruchu OPSC koruchi state government sethi there is a independent organization that will choose the brilliant officers those will go to the all parts of the country and they will means implement the rules and regulations of the states into सब अछि बहुत गुडा जिंस अछि आ कहबा में समय बहुत कम अछि आ जते बेले मो टाइम पाइबी आपण माने जदी कहबे यही पर्टिकुलारली जो कॉन्स्टिट्यूशन उपरे लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर किंतु गोटे जिनस हमको बुझिबा को पड़िबो कि कॉन्स्टिट्यूशन गोटे एमती जिनस आमे ताकू लाइव देबा आ ताकू भलो करी आमे जते बेले आमे ताकू इंप्लीमेंट करबा माने भलो सोल दरकार गुड सोल पीपल हैविंग गुड सोल इज नेसेसरी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली गुड गवर्नेंस जते बेले कहूछु आमे हम गोटे एग्जांपल देबी भाबुतली आमे चालन जीवा देखिबा बाजार रे स्कूटर कहार गोटे ईस्ट आड़ को थी कहार गोटे मोटरसाइकिल वेस्ट आड़ को थी ये मुझे परिवार किणवी ये मो गाड़ी टाक ये रखीदेवी ये रखी बिकज आई एम ए प्रोमिनेंट मैन ऑफ दिस टाउन मत कहीं अन्य मैंने करेंगे बुझिपारे से हूँ कथा आमर जो स्कूटर एगुड़ाक भी ठीक रखा हे गोटे आड़ को मुह हो सुंदर देखा आम जापर आम वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज से बहुत जिनस दरकार आमको इम्प्लीमेंट करें बहुत जिनस दरकार बुझेबारे बहुत जिनस दरकार आम केवल निजर इगो को आम
ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛୁ we are exposing our ego in almost all the spheres of our life ସେଥିପାଇଁ all right thank you all I also thank you to this organization because they have invited me as a guest thank you Thank you, sir. I means illness, we means wellness. We the people of India. हम wellness ऊपर जाऊछु आ बड़ कथा हला सर आज आमे को बहुत तथ्य देइछन से तथ्य सहित मु अनुरोध करबी आमे बहुत शीघ्र गोटे यूथ पार्लियामेंट करबा को जाऊछु कोलाहांडी रे यूथ पार्लियामेंट रो सर यूथ पार्लियामेंट रो मूल लक्ष्य रहिबो आमे रामायण महाभारत जेतिकी इम्पोर्टेंट देकर पढ़ुछु सेमती पार्लियामेंट आम ड्यूटी राइट्स को सेमती इम्पोर्टेंट दरकार कहबार अर्थ है जेते आम मैट्रिक +2 पढ़ुछु सार जो किछि कले मुख्य कले मन किछि कष्ट अच्छी आम समस्त कष्ट अच्छी लेफ्ट इंडिकेटर करी राइट काटिदेवा राइट इंडिकेटर करी लेफ्ट काटिदेवा ड्राइविंग कथा है पार्किंग करवा कथा बहुत किसी जिनस अच्छी वी हैव टू सोशियली एजुकेटेड से सोशियल एजुकेटेडटा आमर पार्लियामेंट बा खास करी आम कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ देछि आमको सार को आज ये पवित्र दिन में अनुरोध करी आम कलाहांडी यूथ पार्लियामेंट करिया को जाऊछु ईच एंड एवरी कॉलेज रे आउ बिलो 40 years दे विल बी द मेंबर आ सेठी जिन आमर एजुकेशन मिनिस्टर अच्छी आपनर शिक्षा मंत्री रहिले तो पार्लियामेंट रे आपनर जो रहिले परिवेश मंत्री रहिले विविध खाद्य जोगाण मंत्री रहिले विभिन्न रहिले जो पिला माने यूथ खास करी बिलो 40 जेते सब रही कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल ओयूटी लेवल इंजीनियरिंग मेडिकल से माने दे शुड नो व्हाट इज द पार्लियामेंट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज से माने को जणा नहीं से माने गोटे बही पढ़वार अच्छी सार जो कहबार अर्थ है से माने दे हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पेज नूक एंड कॉर्नर पढ़ला परे से माने तांकर जो ड्यूटी रेस्पॉन्सिबल आम सब राइट चिंता करूँ आम ड्यूटी रेस्पॉन्सिबल विषय आम चिंता करूँ वी हैव स्टार्टेड गोटे प्लानिंग आम सार को अनुरोध करूँ सार आमको दिग्दर्शन देवे आईपरी भाव आम आगू जावा निश्चय आम भारत गोटे सोनार देश थिला आ सोनार चिड़िया थिला और रही धन्यवाद जय हिंद आमर विभिन्न कार्यक्रम होता खास करी ड्राइंग डिबेट आउ एसे कंपटीशन होता से कृतकार्य होती बहुत मात्रा समस्ते सहयोग करते 20 ରୁ 25टा स्कूल आसी से आज रिजल्ट अच्छी डिक्लेरेशन करा आमर सार तरफ मोर अनुरोध करी समस्त को उत्साहित करेंगे आशीर्वाद देवे आउ से जो अमृत भारत 2047 मसीहा तार स्वप्न एमाने सब देखुचन आ से स्वप्न तांको थोड़ा आम देखा ओवर टू मोहन बाबू At first, we are going to declare drawing competition in class 1, 2, 3 level. Manyat Raut from Sri Satya Sai Vidya Mandir got the first position. Manyat Raut. I am requesting ADM sir to do the honor of prize distribution. Bhavya Khamari from Stepping Stone. Bhavya Khamari from Stepping Stone got the second position. Soumya Ranjan Maji from KV, second position. सौम्य रंजन माझी केंद्रीय विद्यालय जन्नत राज बाग फ्रॉम स्टेपिंग स्टोन
Jannat Rajbag. Dibyansi Maji from Kiss Residential got the third position. Dibyansi Maji from Kiss Residential. Come. Sir. Barik. Next was এটা দিব্যাংশী মাঝি मैम चेंज कर दो हाँ दिव्यांशी बारिक दिव्यांशी माझी को चेंज कर दो थैंक यू अभिज्ञान साहू फ्रॉम श्री सत्य साई विद्या मंदिर अभिज्ञान साहू Now in group B, 4th 5 class, Kumari Bhomi Naik from Vikas Residential. Kumari Bhomi Naik from Vikas Residential got the first prize. Parjeet Singh Maji from KV Bhavani Patna. Parjeet Singh Maji. Anvesa Misra from Bimla Convent School. Anvesa Misra from Bimla Convent School. Given to Reddy sir. Reddy sir. Riyansh Panda from KV Bhavani Patna. Riyansh Panda, ठीक है छाड़ दे नहीं सेटा नेक्स्ट दिव्यांशी पंडा नेक्स्ट दिव्यांशी पंडा नेक्स्ट काना करले नहीं सेटा ठीक अच्छे ना दे दियन सर दे दियन तो रियांश पंडा एबे नेले सर्टिफिकेट धरि आन दिव्यांशी पंडा फ्रॉम शास्त्री जी रियांश पंडा भी दिव्यांशी पंडा Muskan Patel from KV. Muskan Patel. Samiksha Panigrahi from KV Bhavani Patna. Samiksha Panigrahi. Wait. No, sir. Samiksha Panigrahi from KV Bhavani Patna. Extra roki don sir. Extra roki. Ashi samjhe. ମୁଁ ଡାକିଦେବି ଏବେ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମାଝୀ ଫ୍ରମ୍ କିସ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ अपराजिता प्रियदर्शिनी फ्रॉम विवेकानंद पब्लिक स्कूल absent जसज्ञा साहू फ्रॉम केवी भवानी पटना जसज्ञा साहू फ्रॉम केवी भवानी पटना
Dhanraj Tandi from OAV Bhavani Patna. Dhanraj Tandi from OAV Bhavani Patna. Pulkit Raj Panda from Sri Satya Sai Vidya Mandir. Pulkit Raj Panda. Pousi Maji from Keys Residential. Pousi Maji. Pousi Maji from Keys Residential. Karina Meher from OAV Bhavani Patna. Karina Meher. Karina Meher from OAV Bhavani Patna. Subhasri Badjena from Vimla Convent School. Subhasri Badjena. Subhasri Badjena. Saroj Mahanand from Shastriji Model School. Saroj Mahanand. Gayatri Savar. Gayatri Savar, OAV Bhavani Patna. Gayatri Savar from OAV Bhavani Patna. Pintu Suna. Pintu Suna from Police High School. Pintu Suna from Babula Maji from Police High School. Babula Maji from Police High School. Sorry, sorry. Jagya Seni Maji from Kiss Residential. Jagya Seni Maji from Kiss Residential. Jagya Seni Maji from Kiss Residential. Divyanshu Das from Kendriya Vidyalaya. Divyanshu Das from Kendriya Vidyalaya. Now in ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସିବା। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ। ଯୋଶୀ ନା ଚାଲ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ପରେ ଗୀତ ଗାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନର रिजल्ट अनुसार आम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कलु। बर्तमान मु अनुरोध करी पुणी थे आमर मुख्य अतिथि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दरबान सार को डिबेट आउ एसरे होता कंपटीशन आउ तांकर प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बर्तमान ओवर टू मोन्ड। in standard 8, 9, 10 section essay, first position CIMOs from Bimla Convent School. CIMOs from Bimla Convent School.
Aditya Dalpati from Bimla Convent School. Aditya Dalpati from Bimla Convent School. Any parents are there from Aditya Dalpati? Okay. Sibananda Barik from SSBM Brajabihar. Third in essay. In plus 2 section, Asirbad Amos got the first position from High Tech Public School. Asirbad Amos. In degree section, first position goes to Arya Naik from Manikeswari University. In essay, first position Arya Naik. Pratiksha Naik, second position from OUAT. Pratiksha Naik in essay. In essay, second position, Smruti Somalika from OUAT. In essay, second position, Krishna Priyadarshini Mohanty from OUAT. Krishna Priyadarshini Mohanty. Biswa Vijayani Mahapatra, second position in essay. Biswa Vijayani Mahapatra. Biswa Vijayani Mahapatra. Suprabha Panda from OUAT, second position in essay. Suprabha Panda. Sonia Subhankar Mahapatra from OUAT, third position in essay. Sonia Subhankari Mahapatra. Baijayanti Mahapatra from OUAT, third position. Baijayanti Mahapatra. Ansuman Mishra from OUAT, third position. Now in debate section, in 8, 9, 10 class, first position is Malvika Chaudhary from Bimla Convent School. First position is Malvika Chaudhary from Bimla Convent School. Sivananda Barik from SSBM Brajabihar, second position. Sivananda Barik from SSBM got the second position in debate. Reena Patra from Keys Bhabani Patna got the third prize in debate. Reena Patra. Pratima Maji from Keys Bhavani Patna got the third position. Pratima Maji. Pratima Maji. Any teacher are there from Keys? Ma'am, you can collect. Achha, achha. Dibyan Sahu from Shastriji Model School got the third position.
In debate degree section, Ankit Kumar Misra got the first prize from OUAT. Arya Naik from Mamankiswari University got the second prize. Somya Ranjan Sahu from OUAT got the second prize. Karan Kiran Joshi from Mamankiswari University got the third prize. Bhajandeep from OUAT got the third prize. Arpankar from OUAT got the third prize. Thank you. Participation. बहुत बहुत धन्यवाद 2 मिनट टिके आमे विरोधी परे का सर्टिफिकेट रही गला वर्तमान ये जो कंपटीशन प्रतियोगिता गोटे अद्भुत मेडिसिन तथा औषध भाया काम करे उत्साहित करे आम गण रे दीजन भाई अछन जड़े भौणी अछन से आर्ट रे बहुत प्रचार प्रसार करछन खास करी रेड्डी सर तत्वावधान रे काम होउची आम स्कूल रो विभिन्न कार्यक्रम जहाँ होउची मैं वर्तमान अनुरोध करी आमर श्याम भाई को से आसबे ये जो ड्राइंग कंपटीशन हला ये जो कंपटीशन हला तार उद्देश्य विषय नहीं करी गोटे मिनिट हमको उत्साहित करेंगे श्याम भाई बीइंग ए आर्ट टीचर गोटे मिनिट नमस्कार मोर रेस्पेक्टेड सर एंड पेरेंट्स समस्ते प्राइज पाई समस्ते खुशी बनती किंतु एक्चुअली गोटे कंपटीशन न करते एते पेरेंट्स आसी न थांते से समस्त बांधिकी रखापी ये जिनस करा जाए आ समस्ते जानती किंतु से भितर रही चेष्टा करती आ गोटे बहुत खुशी लगुच ये अगण रे बहुत प्रचुर मात्रा रे पेरेंट्स रही पेशेंस रखिकी समस्त कथा शुणिकी प्राइज पाइले से थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई आमर मुख्य उद्देश्य है प्रति कंपटीशन पछरे उत्साहित जस्ट ए गोटे एनकरेजमेंट मोराल टॉनिक ए टॉनिकटा आमर मार्केट रे नहीं मिले प्रति स्कूल कॉलेज रे जो कंपटीशन हुए से कंपटीशन मूल लक्ष्य है समस्त उत्साहित करवा ए लास्ट बट नॉट लिस्ट आमर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो अच्छी मुंड बाबू को अनुरोध करी से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आनीदेवे किसी भाई आमर जो पार्टिसिपेंट थिले मुंड बाबू पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पढ़ी दियन आराध्या सिंह फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय दिव्यांशी गहिर फ्रॉम श्री सत्यसाई विद्या मंदिर दिव्यांशी दास फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय दिव्यांशी दास हीना मेहर
from OAV Bhavani Patna. Gayatri Sabar from OAV Bhavani Patna. V. Durga Prasad from Sri Satya Sai Vidya Mandir. Sanjana Naik from Bimla Convent. Kusraj Naik from Bimla Convent. Somyaranjan Maji from Kendriya Vidyalaya. Chandrasekhar Tandi from SSBM Rajabihar. Chandrasekhar. Chandrasekhar. Jayalakshmi Naik from SBBS. Jayalakshmi Naik. Kavya Mehir from Sri Satya Sai Vidya Mandir. Kavya Mehir. Pratima Dharua from Kis Bhavani Patna. Pratima Dharua. Thank you. Kavya Mehir. Kavya Mehir. ଶେଷରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ ଆମକୁ ଅଭିଭୂତ କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଦିନର महत्व विषय नहीं कहे। Respected dignitaries on the dais, the audience, parents, students, a warm good evening to everyone. I'm sorry I'm late, but I'm so happy that sir invited me, and I've seen so many people carrying certificates and going. So I would rather appreciate you for organizing this event. And regarding this Constitution Day, you have created memories. Now children can relate to their right to education, which is, and the rights they have in the Constitution and how they can fight for it. And this is the message that you are giving, organizing this as social program. I appreciate you from the core of my heart. And I also wish all the children here to be great, proud Indian citizens and do something for the country. And this motive will naturally lead to great students. And I appreciate that you're, and let them do well in their career and in their life too. All my blessings for all the students who have won the prizes. Congratulations, students. This is only one step ahead. You have miles to go ahead. Thank you, sir. Thank you, sir. मुंड को मु अनुरोध करी से आसी धन्यवाद अर्पण करेंगे। Vote of thanks by Mond. In this special occasion, we are very, very grateful that we got in our surrounding ADM sir, Brahmanand sir, Reddy sir, and Dusmant sir, and all the members and all the participants are very, very congratulations, and thank you so much for making this day very special. Thank you.